Well, in 2026, there are a lot of movies in Bollywood and Indian film industries are lined up, and few of them are really exciting. So, there are a lot of movies that has been announced lately, and I feel that most of the projects are routine, repetitive, and mediocre. Whereas I still feel that there are a few projects that are actually star-driven, concept-driven, and they have the vision, they have the scale, they have the hype, and everything. And I think if they get it right with those projects, देन स्काई इज़ द लिमिट. सो मैं आज बात करने वाला हूँ वो 5 फ़िल्मों के बारे में जो मुझे लगता है कि एवरीवन विल बी स्टन्ड एंड प्रोबब्ली विद द प्रेजेंटेशन ऑफ दोज फिल्म्स फिल्म मेकिंग बॉलीवुड में काफ़ी बदल जाएगी. स्टोरी टेलिंग का स्केल बढ़ जाएगा एंड द ऑडियंस एंड व्यूअरशिप विल चेंज आफ्टर दैट एंड इट विल एक्चुअली सेट ए स्टैंडर्ड बेंचमार्क फॉर फिल्म मेकिंग इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विल कम्पीट विद हॉलीवुड. ऐसा मुझे लगता है. तो मैं अपने टॉप 5 फेवरेट्स बताता हूँ. उसमें से 5वें नंबर पे जो मूवी है वो है अल्फ़ा इसलिए क्योंकि इट्स अ फीमेल लीड रोल एंड इट कम्स फ्रॉम YRF स्पाई यूनिवर्स एंड mostly people don't have expectation from Alpha because it's a female lead and YRF is something that is going through a turmoil and it's too repetitive that people are actually not rooting for it, especially after the failure of War 2. तो मुझे लगता है कि YRF has an opportunity to actually redeem with these two characters. If they get it right, the way they presented Zoya and Rubai in Pathaan and Tiger, if they're able to somehow balance it and the story gets it right, then I think this movie has the potential to do well and also open the gate for the closed project like Pathaan 2 might be renewed and the new project might come in YRF universe is what I feel. Dhurandhar is the one movie that has already been established as a base. I think everybody knows the world of Dhurandhar. Every character, every song is quite popular with all the generation right in this country right now. And Aditya Dhar is somebody who had the conviction that he will shot both the movies in one go and then release in a span of like 4-5 months. I think that shows that he is so confident about his craft. And the title, let's say that Dhurandhar the Revenge. So now this is the time that regardless of Akshay Khanna and Sanjay Dutt and Arjun Rapal's character, he will come out of shadow and become the lead and lead the movie from front. तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हाउ रणवीर अपने आप को कैसा दिखाता है. ये मूवी काफ़ी वायलेंट होने वाला है. आई एम श्योर अबाउट दैट. एंड सिमिलरली टॉक्सिक इज ऑल्सो रिलीजिंग ऑन द सेम डे. टॉक्सिक ने अपना रिलीज डेट बहुत पहले अनाउंस किया था बट डिस्पाइट दैट धुरंधर ने सेम डेट चूज़ की है. तो मुझे लगता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज क्रैश बिकॉज टॉक्सिक कोई छोटी मूवी है नहीं. एंड यस इज कमिंग बैक आफ्टर सो मेनी ईयर्स एंड ही हैज़ गिवन ब्लड एंड स्वेट टू दैट मूवी. एंड उसमें काफ़ी इशूज़ हुए प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में रीशूट हुए काफ़ी, लेकिन नाउ मूवी इज ऑन ट्रैक एंड इट्स गोइंग टू बी रिलीज. इफ आई गो बाय द टीजर व्हाट आई हैव सीन, देयर इज ओनली कार्नेज दैट इज गोइंग टू हैपन. इट विल अगेन ही इज प्लेइंग द ग्रे कैरेक्टर्स एंड दिस टाइम वो ज़्यादा स्टाइलिश है, ज़्यादा हाई स्केल है एंड ही हैज़ गॉन ग्लोबल. तो मुझे लगता है कि टॉक्सिक में भी वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होगा एंड बोथ द मूवीज विल कम्पीट कि कौन ज़्यादा वायलेंट हो सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे विच एवर मूवी इज इट्स नॉट अबाउट एक्शन. जिसकी स्टोरी ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएगी, टच कर पाएगी, जो ज़्यादा डेप्थ होगा, मुझे लगता है वो मूवी जीतने वाली है. बट इंडिया का इतना स्क्रीन शेयर है अभी के टाइम पे, मुझे लगता है कि 7-8 हज़ार स्क्रीन है एंड इवन इफ द स्प्लिट हैपेंस इन नॉर्थ एंड साउथ बोथ द मूवीज हैव पोटेंशियल टू डू समथिंग रियली गुड. आई थिंक मुझे लगता है धुरंधर 2 माइट गेट क्लोज टू 1000 करोड़ अगेन. किंग and it is starring Shah Rukh Khan and directed by Siddharth Anand. दो biggest workforce एक बार फिर साथ में आ रहे हैं after the success of Pathaan. And I am so excited because Shah Rukh Khan is playing grey character after so long. I think last time he played a grey character that was Raees and it was a semi hit. But this time मुझे लगता है the canvas of the movie is going to be huge because Siddharth Anand is one creative director जो चीज़ों को बहुत high scale पे लेकर जाता है. उसने पिछली मूवी जो फाइटर थी that didn't do well but the quality of movie was immensely great and उसने एक साल में बनाई थी. तो I can imagine that the 2 years that he has taken, definitely he is taking this movie to next level in term of production, in term of action and presentation. And Shah Rukh Khan will, as they say, right, this is a new Shah Rukh Khan experience in the announcement video and it is going to be that. And this is the first time he's working with his daughter and the other star cast, of course, Rani Mukherjee and then Anil Kapoor, then Raghav Julial and Suhana and all are coming. So Jaideep Ahlawat. So there's so many solid actors who are actually coming together also as a side character. So मुझे लगता है कि he's going to cook something really nice. Ramayana is a story that everybody knows, every household knows that it's the most popular stories and the people of every generation has grown up watching it. So what is new that they can offer? तो जितना मैंने इंटरव्यूज में देखा है, सुना है और समझा है दैट द डायरेक्टर नीतीश तिवारी ही हैज़ दिस कन्विक्शन एंड क्राफ्ट दैट ही कैन प्रेजेंट सम स्टोरीज टू द ग्रैंडेस्ट लेवल लाइक दंगल वाज दैट वन ऑफ द एग्जांपल. एंड द प्रोड्यूसर आई थिंक निमित ही हैज़ वेंट ऑल आउट with the money and canvas that he has approached people who have worked in Avatar series. They have done the VFX of it. So this time they try to create Ramayana that will be with the use of new age technology and that will be for the Gen Zs, Gen Alpha and the generation that is coming after that, not just millennials and the generation before that, right? So मुझे लगता है कि if they get it right, if they're able to get the story and the new age effects, VFX that is there and they're able to combine it together and they bring something nice, मुझे लगता है कि there's no stopping. The movie will not just be a regional movie or Bollywood movie, it will work all across India, even in South, and not just this, in the whole world
बहुत अच्छा काम करने वाला है। मुझे लगता है कि इंडिया में सिर्फ 2000 करोड़ से कम की बिजनेस नहीं करेगी ये मूवी, और मुझे लगता है कि इस मूवीज़ के बाद एक बेंचमार्क सेटअप हो जाएगा बॉलीवुड के लिए कैसे फिल्में बनानी है। बट these are the top 5 picks I had, and there are a lot of movies, other movies that I wanted to cover, but I might make a different video on that, which I am excited. But these are the top 5 picks with the great director, great production houses, and big stars, big names. So yeah, this is it. And I am somebody who is a film enthusiast. I have been reading, understanding, learning about movies for the longest time, and I have built this place. I have come here just to build this community to discuss movies and how we can understand the storytelling, what will be the future of storytelling and movies in this country. And if you're somebody who like this conversation, join me in. We will build this community, we will have this conversation, we can connect to each other and share the idea, and let's see how it goes.